next chapter that we will do is absorption by roots. ठीक है, तो first इसमें है give reason. The give reason question says wooden doors get jammed during monsoon season. अभी wooden doors get jammed during monsoon season के आंसर में होना चाहिए imbibition. We should also know that wooden doors are made up of cellulose. Cellulose has a high liking towards water, या फिर you can say cellulose is hydrophilic. It absorbs water by the process of surface attraction. You should also know your definition for imbibition, process by which living or dead plant cells in their dry or semi-dry state absorb water by surface attraction. Fertilized soil found to wilt if soil is not adequately watered. Fertilizer excess will act as a hypertonic solution. It will draw water outside the cells of the plant by exosmosis, leading to plasmolysis. So three keywords are hypertonic, exosmosis, plasmolysis. Define the term active transport, okay, and give one example. So what are the things that we are looking at? We are looking at movement of minerals, or we are looking at movements of iron or solute. आपके ये एग्जैक्ट डेफिनेशन में ब्रैकेट में दिया है, बट लिखना जरूरी है, आयन या solute from a region of its lower concentration to a region of its higher concentration, and this is a process which requires energy. Example is absorption of minerals by root. Minerals by root are absorbed by active transport. Factors contributing to ascent of sap. एक pushing force है, which is your root pressure. एक pulling force है, which you are generating because of transpiration. उसको we are calling it transpirational pull. एक force of attraction between water molecules है, जिसको we are calling cohesion. एक force of attraction between water molecules and walls of xylem है, जिसको we are calling adhesion. और last वाला है capillarity. Narrower the diameter, greater the rise in the level of water. ये सब के बीच में एक odd one out and category of the rest है, both solutions चेक कर लेना. Space between the cell wall and the cell membrane in a plasmolysed cell is always filled with the hypertonic solution. This is the solution in which the cell has been placed. Marine fish bursts. अगर वो burst हो रहा है, मतलब क्यों burst हो रहा है? क्योंकि पहले उसके अंदर पानी गया था. अंदर मतलब entering the semi permeable membrane. Entering, en वाला entry, तो entry due to osmosis. Answer is endosmosis. लॉजिकल सीक्वेंस कहाँ से शुरू करेंगे? सॉइल के अंदर का पानी रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से कॉर्टेक्स जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से जाइलम. अच्छा, अगर वेन्स आएगा तो यहाँ पे वेन्स ऐड करके, तो वेन्स विल बिकम द सिक्स्थ वन. ये रूट हेयर का डायग्राम है. अगर ड्रॉ करने के लिए आए तो भी यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. कैसे ड्रॉ करेंगे? यू कैन ड्रॉ ओनली वन सेल. ये हो गया आपका सेल वॉल. यहाँ से एक्सटेंड करेंगे सेल वॉल को. इसके अंदर यू विल ड्रॉ दी सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद यू विल ड्रॉ दी वैक्यूल. फिर वैक्यूल के बाद यू विल ऑल्सो ड्रॉ द न्यूक्लियस. इसको सेल वॉल, फ्रीली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस. वैक्यूल के अंदर का टॉनिसिटी हाइपरटॉनिक. यहाँ पे दिस सोल्यूशन इनसाइड द रूट हेयर इज हाइपरटॉनिक. पार्ट्स हो गया. turgid state में है. Why? Because of endosmosis. So you can either define endosmosis, or what can you define? You can define osmosis. अगर osmosis है तो movement of water molecules from a region of its higher to a region of its lower concentration, ठीक है, across a semi-permeable membrane. अगर endosmosis है तो inward movement of water into a cell when it is placed in a hypotonic solution. अगर part labeled A semi permeable है, if it is pointing to the cell membrane, then it is semi permeable. Part number B is freely permeable. Draw the diagram when concentrated solution of fertilizer is added. Fertilizer will be hypertonic, तो exosmosis, plasmolysis. तो cell wall को वैसे ही रहने देंगे. This is the drooping root hair we can draw. This will be our cell membrane. This will be the vacuole and this will be the nucleus. Label करके यहाँ पे hypertonic solution होगा. And this labeling will be the cell membrane. Okay, this is a plasmolysed cell. पहला वाला labeling is cell wall. उसके बाद ये जो solution है बीच में, this is hypertonic solution. Hypertonic solution है. Assuming that 3 is pointing to this membrane here, then 3 is your cell membrane and 4 is your nucleus.
अगर स्टेट पूछेगा तो दो आंसर पॉसिबल है, यू कैन राइट प्लाज्मोलाइज्ड और यू कैन राइट फ्लैसिड। विच इज द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो सेल मेम्ब्रेन आपका इज सिलेक्टिवली परमिएबल। How can you bring this back to original condition? We've already labeled now. How can you get it back to original condition? You place it in pure water or you place it in distilled water. Or if you don't remember distilled water, then you can write you place it in hypotonic solution. या तो हाइपो में रख सकता है या डिस्टिल्ड वाटर में रख सकता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द रिकवरी ऑफ द सेल? तो रिकवरी ऑफ द सेल को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। इट इज द रिकवरी ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। स्टेट टू फीचर्स नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, तो सेल वॉल एंड प्लास्टिड यू विल नॉट फाइंड। श्रंकन वैक्यूल नहीं लिखना बिकॉज वैक्यूल छोटा हो सकता है एनिमल सेल में प्रेजेंट हो। Diagram is showing root pressure. So part number one is root hair. Root hair is a unicellular extension of the root epidermis. Part number two is soil water. Part number three is xylem vessels. And part number four is cortical cells. ये सेम आपका लॉजिकल सीक्वेंस इसीलिए था। सॉइल वाटर से रूट में जाएगा बाय ऑस्मोसिस across one cell to the other, cell to cell osmosis, and it will reach the xylem. Which process enables the passage of water from soil into the root hair? Osmosis या end osmosis? प्रेशर कौन सा होता है यहाँ पे? तो we are looking at root pressure. रूट प्रेशर के डेफिनेशन में प्रेशर क्रिएटेड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस लीडिंग टू असेंट ऑफ सैप। एक्सेस रूट प्रेशर होगा तो उसके वजह से यू कैन सी गटेशन। आइडियली गटेशन के लिए यू कुड राइट इट इज एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बट इन केस यहाँ पे इन्होंने पूछा था ना ड्रॉपलेट्स आर सीन अर्ली मॉर्निंग, तो गटेशन। नेक्स्ट वाला वी ऑलरेडी डन। This is a potato osmoscope. Osmoscope is something that is used to study osmosis. यहाँ पे पानी डाला हुआ है, here in the beaker. In the cavity, you have concentrated sugar solution. So sugar solution, water. So water is more in the beaker. So water will move from the beaker into the cavity. The semi-permeable membrane here is the potato that is used. So observation बोलेगा तो rise in the level of solution in the thistle funnel, sorry, in the cavity of the osmoscope. Rise and fall in level of solution is always the observation. फिर वो बोलता है what will happen if you place dilute solution in the beaker? तो अगर यहाँ पे dilute है मतलब ज्यादा पानी है तो पानी बाहर जाएगा। तो सेकंड वाले इसमें they've changed it and they're saying what will happen if a dilute solution is placed in the cavity, more water in the cavity, so there will be fall in the level of solution in the cavity. What is the role of this pin? It is to mark the level of solution in the cavity. What will happen if you use a boiled potato? On boiling, the semi-permeable nature is lost. Once the semi-permeable nature is lost, no longer osmosis will take place. Both solutions will flow to their equal concentrations. This one is to show the role of xylem, और इसका aim is to show, इसका aim is xylem का function, to show that xylem transports water and minerals from roots to the other plant parts in an upward direction. अगर आपको drooping leaves दिखेगा जैसे कि यहाँ पर है, that means ये वाले part से आपने xylem निकाल दिया है. Because if you remove the xylem, that means water does not reach up to the leaves. That means loss of turgor pressure. Okay, that is the A बोल दिया observation. B वाले में leaves are turgid. अच्छा, if this continues, then you may see swelling over here above the girdled area because यहाँ से you have removed the phloem. Phloem will be removed, so you will see swelling above the girdled area, and the lower part will start shriveling like this. Ascent of sap is upward movement of water and minerals in xylem. We've already listed the factors responsible for ascent of sap. अच्छा, turgor pressure वाला idea and wall pressure वाला idea. If you look at turgor pressure is the pressure exerted by the cell contents on the cell wall when it is turgid, like this. And wall pressure is the pressure exerted by the cell wall on the cell contents again when it is turgid. अगर cell fully turgid है तो TP is equal to WP.
अगर सेल बर्स्ट करता है मतलब टर्गर प्रेशर इज मोर देन वॉल प्रेशर. What is the application of turgor pressure? Opening and closing of stomata. Roots can penetrate deep into the soil because the tips of the root are turgid. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और आंसर है लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर वाला. वो लीव्स ऑफ माइमोसा प्यूडिका दे ड्रूप ऑन टच बिकॉज there is a loss of turgor pressure at the base of the leaflet in the pulvinus. Next, transpiration. Balsam plant will wilt during midday even if the soil is well watered. वो विल्ट हो रहा है, विल्ट हो रहा है, मिड डे में विल्ट हो रहा है, और बट तो भी सॉइल में पानी है. तो दो रीजन. पहला रीजन ये है कि अगर वो विल्ट हो रहा है तो इट विल डिक्रीज द सरफेस एरिया, ड्यू टू विच नाउ देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. दूसरा रीजन ये है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है, दैट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is more than the rate of absorption of water. Because the rate of transpiration is more than the rate of absorption of water, the plant is wilting. लॉजिकल सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे जाइलम से. द वाटर फ्रॉम द जाइलम देन गोज इनटू द मेसोफिल सेल्स, फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस, देन सबस्टोमेटल स्पेस, एंड फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द स्टोमा. दैट इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. Experiment to demonstrate transpiration, Bell-jar wala. Loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. Why is the pot covered with a plastic sheet? Pot is covered with a plastic sheet to ensure that any moisture from the soil does not evaporate and condense in the bell jar. Two ways, one way, दो ways by which it is beneficial to the plant. First is cooling effect. Second is loss of water by transpiration creates a suctional force. वो suctional force को हम बोलते हैं transpirational pull. Excuse me. यानी ये transpirational pull के वजह से there is ascent of sap. Suitable control for this experiment will be same setup, but it will be without a plant. अच्छा, इसी के जगह पे अगर वो ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाता तो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विल टर्न पिंक. या फिर वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखता तो देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द वेट ऑफ द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अगर यहाँ पे बेलजार के रिम पे वो वैसलीन लगाता तो इट इज टू एंश्योर दैट द apparatus इज एयर टाइट, बाहर का मॉइस्चर इज नॉट एंटरिंग ऑन द इनसाइड. सेम आइडिया है, खाली ये क्वेश्चन नया है उनके लिए. और ये वाला मेंशन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कैन एक्सेलरेट द अबव प्रोसेस. तो 6 फैक्टर है जिसमें से 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सनलाइट बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर विल बिकम वार्म, वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. विंड वेलोसिटी बढ़ेगा तो मॉइस्चर लेडन एयर इज क्विकली रिप्लेस्ड बाय ड्राई एयर, ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. ठीक है. और प्रेशर, उसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स ये है. कौन से किए हमने? हमने किया सनलाइट, फिर हमने किया टेम्परेचर, फिर हमने किया विंड वेलोसिटी. ये तीन अगर इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू राइट द रीजन. मतलब खाली सनलाइट लिख के मत छोड़ देना. You write as sunlight increases, the number of stomata open increase. Therefore, rate of transpiration increase. External factor है ये. Second is क्या? Temperature. As temperature increases, the air becomes warm. As the air is warm, it can hold more moisture. Wind velocity. Wind velocity increases, rate of transpiration increases. Moisture laden air is quickly replaced by dry air. ये तीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे. अच्छा, तीन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे. एक ह्यूमिडिटी. एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. एयर इज सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर, इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर. CO2 concentration. As CO2 concentration increases, it causes partial stomatal closure. So again, transpiration decreases. And pressure. If the pressure outside is low, then it hastens the outward movement of water vapor. Okay, so सात नहीं थे. Two adaptations to reduce the above process. एक होता है sunken stomata, जिसका example है Nerium. Nerium is also an example of Nerium, Nerium. It is also an example of narrow leaves. दूसरा होता है leaves modified to spines, जिसका example है cactus. या फिर होता है thick cuticle. Thicker the cuticle, lesser the rate of transpiration. Cuticle is a waxy layer on the leaf epidermis. Okay.
डायग्राम ऑफ स्टोमेटल apparatus फ्रॉम द डायग्राम शीट प्लीज डू। अभी ये वाले में देखो, जहां पे भी आपको वेट का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे व्हाट आर वी लुकिंग एट, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वेइंग मशीन दिखेगा तो नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। ऑयल क्यों ऐड किया था? सो वेर एवर यू ऐड ऑयल यू आर एसेंशियली लुकिंग एट प्रिवेंटिंग सरफेस इवेपोरेशन। अगर आपने इसको ब्राइट सनलाइट में रखा तो फाइनल एंड इनिशियल वेट का क्या डिफरेंस होगा? इफ यू कीप इट इन ब्राइट सनलाइट, मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट, मोर द वाटर लॉस्ट, मोर द ट्रांसपिरेशन बेसिकली, तो वेट विल रिड्यूस। What happens to the level of water in humid condition? अगर कंडीशन ह्यूमिड है मतलब ट्रांसपिरेशन कम है, अगर ट्रांसपिरेशन कम है तो लेस वाटर विल बी लॉस्ट, तो लेस फॉल इन और लोअर फॉल और स्लोअर फॉल इन लेवल ऑफ वाटर। एंड विंडी कंडीशंस में फास्टर फॉल और ग्रेटर फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। अडेप्टेशंस किया हुआ है, गटेशन भी किया हुआ है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइडोथोड्स लोकेटेड एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, नास्टूर्टियम है, एज एग्जाम्पल्स। ओके, Genong's photometer. What does it measure? Amount of water uptake by the cut shoot. What is the use of this reservoir? To push the bubble back to its starting position to restart the experiment. What are the limitations? तो दो लिमिटेशन है। पहला कि बहुत सारे हैं, दो लर्न कर लें। दो लिमिटेशंस है, पहला दैट दिस ट्विग डज नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल बबल इज डिफिकल्ट। फिर दो प्रिकॉशन भी है, दैट दी apparatus should be water tight। दूसरा, ये जो ट्विग है इसको कट करते हैं obliquely to increase surface area and under water to ensure air bubble does not enter the xylem। ठीक है, apparatus is what? Genong's photometer। याद रखिए, ट्रांसपिरेशन मेजर नहीं करता। Genong's photometer, uptake of water which is approximately equal to water lost by transpiration। Two limitations both their importance. Rate of movement of bubble is equal to amount of water uptake, which is approximately equal to water lost by transpiration। Name the structures through which transpiration takes place। तो तीन है, स्टोमेटा है, लेंटिसेल है, क्यूटिकल है। स्टोमेटा कहाँ है? एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लेंटिसेल कहाँ है? बार्क ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम। क्यूटिकल कहाँ है? वैक्सी लेयर ऑन लीफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा लेंटिसेल का कॉमन फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोजेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। लेंटिसेल इज परमानेंट ओपनिंग, दे आर ऑलवेज ओपन। To compare the rate of transpiration from the two surfaces of a dicot leaf। आपके dicot leaf को और क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये जो डाइकॉट लीफ होता है इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है या जो लोअर सरफेस होता है, इस पे देर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द वेंट्रल सरफेस, देर इज मोर अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जब मोर अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा तो cobalt chloride paper placed on the lower surface will turn blue to pink faster compared to the upper surface। Why do you place this glass slide over here? To ensure the atmospheric moisture does not come in contact with the cobalt chloride paper। याद रखना, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे cobalt chloride paper placed on the lower or the ventral surface turns blue to pink faster compared to the upper surface। Aim is to compare the rate of transpiration from the two surfaces of a dicot leaf। How do you identify it as dicot? Because of the presence of reticulate venation। Reticulate venation is that arrangement of veins that you see like this। ये वाला जो ब्रांचिंग नेटवर्क है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकॉट में ही मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए you have to use dicot because dicot shows unequal distribution of stomata, monocot shows equal distribution of stomata। ओके, ऊपर से यहां से ट्रांसपिरेशन होगा, इट विल क्रिएट अ सक्शनल फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी वजह से मूवमेंट ऊपर होगा। नॉर्मली वाटर इज पुल्ड अप but the transpirational pull is so strong that it is even pulling mercury upwards like this। So will the level of mercury rise or fall? The level of mercury will rise। Which glass tube does it represent? So it represents xylem, क्योंकि ascent of sap xylem में होता है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं करें आगे। हाउ विल द रेट चेंज इफ द एनवायरमेंट हैज लेस ह्यूमिडिटी? अच्छा, अगर ह्यूमिडिटी कम है दैट मींस ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। रीजन, लेस ह्यूमिडिटी मींस एयर इज ड्राई सो इट कैन होल्ड वाटर वेपर। हाई टेम्परेचर, अच्छा अगर टेम्परेचर ज्यादा है
more the temperature, that means air is warm air can hold more moisture, मतलब transpiration increases. बाकी दोनों repeat है. This is the diagram of the stomatal apparatus. ठीक है, so if you see the stomatal apparatus, A जो है ये वाला, this is your guard cell. ये जो गार्ड सेल होता है इसका दो स्पेशलिटी होता है. इसका इनर वॉल थिक होता है, आउटर वॉल थिन होता है. इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके, व्हाट इज इट्स फंक्शन? गार्ड सेल का फंक्शन इज टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय चेंजेस इन टर्गर प्रेशर. ठीक है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज द स्टोमेटल apparatus, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्टोमेटा. ए का फंक्शन बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स या एडेप्टेशंस भी बोल दिया. थिक इनर, थिन आउटर वॉल, 1 पॉइंट. लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, 2nd पॉइंट. वेयर इज इट फाउंड? एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. ठीक है, ये बाकी के नेक्स्ट दो.